Namaskar, Adab, welcome to Teachtigers, and this is yet again Eswaran, your mathematics mentor, and we are into exciting topic of fundamental of mathematics. Fundamental of mathematics. It is the base of mathematics. These are those areas which are usually untouched in irregular classes. Even it is there something like side में हो जाएगा, कर लेंगे वाला attitude है. क्यों? बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हम टाइम कम बिताते हैं बिकॉज दीज आर ऑल द टॉपिक्स ऑफ ए बिग टॉपिक. बहुत बड़ा टॉपिक होगा उसमें छोटा सा टॉपिक विल बी दिस एंड देन वी फील दैट एज अ टीचर वी फील दैट बच्चे को तो आता होगा. So in my almost 2 decades of experience, what I seen that in these topics usually students stuck. Reason, when it comes to class 11th and 12th, that particular cluster, it's a very mixed kind of cluster. One kind of student who knows everything, including the beginning of class 11th. They know many topics of class 11th and 12th because some foundation they have done in the class 8th, 9th, 10th. It is good or bad, I'm not coming, but there is a difference. Second kid are bindas. अरे छोड़ो क्या करना 11th में पढ़ेंगे. And because of somebody's, they come to class 11th into a competitive track, either is IIT-JEE or NTSC, or it is आपका 10th का, or it is your KVPY, or it is even your IIT-JEE Advanced or Mains, or obvious in other subjects like your NEET, right? तो अब दोनों एक साथ मिले. One student knows everything in the beginning. Both are of same brain. दोनों का दिमाग एक जैसा है. One student who knows everything of basics, he feels himself superior, and the other person feels himself inferior because he doesn't know anything, in spite of having the same brain. In spite of having, so this beginning motivation is so important, my dear friends. If the parents are there who are listening to this, it's so important. बच्चे को लगता है यार I lost it. In the beginning बच्चा बिल्कुल motivation level high होता है. But slowly, it goes down, and one stage comes where start judging himself or herself and feel that no, we are good for nothing. It is, I'm not saying this is, but these are the areas which are actually untouched. ये बहुत छोटे आते हैं, फटाफट कर दिए जाते हैं. So here, I have personally developed an entire lesson which deals about fundamental mathematics. Here, I'm not going to discuss about number theory, which we can in other like lessons you can have. We're not going to discuss about any number system or properties of logarithm. वो करेंगे, बात अलग है. We are going to talk about basic functions. We are going to talk about some basics of matrices and determinants. We are going to talk about some basics of modulus function. एक to be specified. Because बहुत कम टाइम दिया जाता है. Because more तो इंट्रोड्यूस हो गया क्लास 9th में. We will talk about greatest integer function which is more. No, बच्चा डब्बा हो जाता है. बच्चे को समझ नहीं आता क्या आ रहा है. So, in today's pick, what we have introduction, right? We have definition of a function, and the first function, the foremost function, be modulus function, we'll discuss about. ये 3 आज हम डिस्कस करेंगे. We'll try to be as slow as possible. आराम से करेंगे, because यही differentiator होता है. And if this has been taken care properly, I'm telling you, कोई फर्क नहीं होता एक नॉर्मल बच्चे में और एक नॉर्मल बच्चा का मतलब द स्टूडेंट हु डिडंट डू एनीथिंग इन क्लास 8th and 9th and 10th नॉर्मल बच्चा मेरे लिए, एंड सम स्टूडेंट्स हु हैव डन समथिंग सो दे हैव स्लाइटली अहेड ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, राइट? सो ये करेंगे तो ब्रिज बन जाता है. सो लेट अस स्टार्ट अप विथ इंट्रोडक्शन. व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, these, like I told before, these are those topics which are usually overlooked by teachers, by administrators, by the people who are designing the course. Overlook हो जाता है because वो बिल्कुल beginning में होता है. That means when you start in the month of April, May, जब आप अपने कोचिंग में जाना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे स्टार्ट होता है. And then some people join in April, some people join in May, some people join in June. कहता है भैया 10th बहुत पढ़ लिया, आराम से जाएंगे, 2 महीने में FOM खत्म. The same FOM which have been taken 1 month in one particular track. The second track, it doesn't even take around 8 to 9 classes because उतना ही है, but practice ज़्यादा करना होता है. So video classes का सबसे बड़ा advantage है, you can have your own pace. It is self-paced lessons. आपको फटाफट करना है, आप डेली 4 वीडियो देख लो. आपको धीरे करना है, डेली 1 वीडियो देखो और उसके पीछे उसका assignments करो. Assignments are there, you can always check about this particular topic, right? So let us come back. Basics, right? Pehla basic will start up with functions. Yeah, function here I'm not going to teach you function.
टेक केयर, फंक्शन में पढ़ाने वाला, फॉर दैट यू हैव अ सेपरेट टॉपिक इन क्लास 12th, फंक्शन, देन लिमिट, देन कंटीन्यूएंट डिविजिबिलिटी. पहला टॉपिक है कैलकुलस का, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू, इट इज गुड, excellent, मजेदार. Function comes in algebra as well as in calculus. We have put in calculus, depends on you how you want to take it, right? So when we talk about functions, ये function है क्या, कैसा होता है, कैसा पाया जाता है, किस तरह से आता है, let us discuss that. Functions. Before starting the function, let us recap something that you have done in your class 10th. 10th class में जो आपने किया उसको थोड़ा recap करते हैं. 9th में भी graphs. You had something called y is equal to x plus 1. Remember? You had something called y is equal to x plus 1. कुछ ऐसा ग्राफ था. तो if I ask you, बच्चे राजा, draw the graph of this. How do you do? You say, sir, we'll make a dabba. In that I'll take x and take y. I'll put the value of x. I'll get the corresponding value of y. I get the points in graph. Okay. So I'll put x0. Y will be 1. Yes. I put x1. Y will be 2. Yes. I'll put x3. No. I'll put x minus 1. Put कर लो. Y will be 0. Nothing wrong. I'll put x3. Y will be 4. Right? So then I'll take up the x-axis and y-axis. X-axis here, y-axis here. And I know that x0, 1, minus 1, 3. So 0, 1, minus 1, 2, and 3. Corresponding this 1, 2, 3, 4. तो पहला पॉइंट है 0,1 यहाँ पे आएगा. दूसरा पॉइंट है 1,2 यहाँ पे आएगा. तीसरा पॉइंट है -1,0 यहाँ पे आएगा. चौथा पॉइंट है 3,4 तो यहाँ पे आएगा. एंड सर आई विल जॉइन ऑल दिस. ओके, वेरी गुड. सो ये जो ग्राफ आया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1. ओके. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ये इक्वेशन है क्या? इट इज रिलेटिंग द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विद द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस विद सम रिलेशन. एक रिलेशन है y. ओके, सेम x and y axis I can keep. I can ask you to draw y is equal to x square. Can you draw it? Same x and y axis I can keep. I can ask you to draw y is equal to x square. I said, yes sir, बड़े आराम से करेंगे. फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा? I'll take one more डब्बा. हर एक के लिए डब्बा है हमारे पास. I'll take x, I'll take y. Some points I'll take. Sir, I'll take x0. Y will be 1. X will be 1. Y will be 1. Sorry, x0, y0. x1, y1, x minus 1 में भी y1 सर. ओके, बहुत बढ़िया. x2 में y4. सर x minus 2 में भी y4. ओके, बहुत बढ़िया है, सच है, गलत नहीं है. सो लेट अस ड्रॉ. 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे भी 1, -2 में भी 4. ओके, आई जॉइन ऑल दिस सर. इज लाइक दिस. सो दिस ग्राफ इज y is equal to x square. बहुत बढ़िया. था वही x, था वही y. It was the same x and same y. Same y. One was relation y is equal to square of x. Other was relation y is 1 more than x. It is a relation between x-axis and y-axis. Are you getting me? It's a relation between x-axis and y-axis. So you take some points on x-axis, you take certain points on y-axis. You try to relate both of them, depends upon the kind of relation or the equation which you used to call in class 9th and 10th. So, right? So, whatever you draw, it's a graph of a relation. There are many kind of relation. It's same relation like your life. Papa, mummy, bacha, mummy, son and a father, daughter and a mother, daughter and a father, friend and a friend. It's most important for us, right? And even you can talk about husband and wife. You can talk about teacher and a student. This is the relation we are having. What is our relation? A teacher and a student. There are many kind of relation. Same way, there are many kind of relation. Any equation you are writing in terms of x and y. Any equation you are writing. Any equation y is equal to sin x, y is equal to cos x. Is a relation between y and x, or y square is equal to x. All these are relations. Out of these, some relations are functions. Some relations are functions. Some relations are not functions. We are talking about a kind of relation which satisfies certain condition. Then they become function. Otherwise, there are many relations. Example, if I talk about a typical like a friend relation, we are not blood relatives. So that condition gone, right? Or like you talk about a relation between mother and a son. So a relation between mother and a son has got certain parameters.
right? It's a blood relation, a gene concept, father and son gene concept, or there are many other properties which are common that is not there between two friends. So this relation not same as that relation. Obviously, every relation has got some condition applied, isn't it? Same way, a function is a relation that has got condition applied. Star लिखते हैं ना, condition applied. जैसे आप किसी बाजार में जाते हो, up to 5% discount, star लगा देता है, condition applied. Same way, function is a relation with condition applied. Those conditions we are not going to discuss here. Those conditions we are not going to. I told you there is a separate chapter function, you can go through it. I'm just saying I'm discussing about something which you have seen. Somebody, us, sometime like in other chapters we write, beta, it is y is equal to f of x and it's a function, okay? Or f of x is equal to x square. Then what was y is equal to x square? Why is writing this? This is writing because if this relation is a function, y can be replaced by f of x. If this relation is not a function, this is not a function. Why it is not a function? You please go and see my functions topic. So then I can't replace this as a function. Are you getting me? So this is not a function. So the relation which is not a function, y can't be replaced by f of x. Y is a function of x. Y is a function f of x. Function of x. Spelling wahi, this is the way we talk about it. So you must have seen. So today we are going to discuss that what exactly the function is. Function is like any other relation, bache raja. Any other relation. Y is equal to x plus 1 we are taken. So we take the value of x, right? We take the value of x and putting x here, I get the value of y. Putting x1, I get 2. Putting x2, I get 3. So a function or a relation is like a machine. ये एक machine की तरह है. Function or relation is like a machine, right? You put something, you get something. Example, take a car, right? Take a car. Suppose I am talking about this, a Santro car, right? Obvious input क्या होता है? Santro में अगर आपको machine चलानी है, तो what is the input? Exactly. It may be diesel or petrol. I am thinking petrol. Taking one case is a petrol, right? So if you put 1 liter petrol, Santro car, example ले रहा हूं बेटा, मत कहना सर मेरी गाड़ी तो नहीं चलती. Example. Suppose it runs around 18 kilometer, right? Because machine ऐसा है कि 1 liter में 18 किलोमीटर देता है. Now I keep the same 1 liter, कार को हटाता हूं और यहां पे Mercedes लगाता हूं. लंबी गाड़ी लगा दी, right? I kept a Mercedes Benz. Obviously, same 1 liter, will the output be 18 kilometer? No, output may not be even 9. Or if you keep any other car, say like your, which is having more mileage, so machine को हटाया, machine को लगाया, input same था, output different. वही हुआ है, यही input, अगर आप यही input, x क्या था? 0, 1, 2, right? y is equal to x plus 1 में लगाया, तो 1, 2, 3 आया output. y is equal to x square में लगाया, वही x 0, y 0 देगा, 1 देगा, 4 देगा. Input same था, output different, क्योंकि machine बदल गई. Machine is nothing but the kind of relation y and x are possessing here. The kind of relation y and x are possessing here, that is called a machine, the relation, right? The relation between the input and output. किस तरह का output निकलेगा depends upon the relation. So function is a kind of relation with some condition applied. So I'll write that. And function is like a machine. Function is a kind of relation with some condition. I am not going to discuss about these conditions, right? We'll discuss in calculus. I mean, कुछ है जो कई relation function होते हैं, कई relation function नहीं होते हैं, right? So let us see. Apart from this, we can think function like a machine. It's like a machine. In this machine, आप x को डालते हो, right? आप कुछ input डालते हो. जैसे आपका ये मशीन का नाम हुआ y is equal to x plus 1 और आपने इनपुट डाला 1, तो कुछ आउटपुट निकलेगा 2. ये जो इनपुट डालते हो बेटा उसको हम कहते हैं डोमेन, राइट? ये जो आउटपुट निकलता है आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू, वॉट एवर वी गेट इट, वी कॉल इट रेंज, राइट? सो व्हेन यू पुट x equal to 1, range is 2. When you put x equal to 2, range value is 3. When you put x equal to 3, range value is 4. Are you getting me? Right?
अबे घुस रहा दिमाग में कि नहीं ढक्कनो, राइट? So when I put x equal to 3, y is 4. When I put x equal to 4, y is 5. Whatever we put in, the value is, output is range. There is something called input domain. There is something called output range. Machine, right? देखिएगा. सपोज आपके पास एक गाड़ी है. इनपुट क्या है इसका? पेट्रोल. If I don't put petrol, I put water. Will the machine run? Will the machine run? No, the machine is not going to run. The machine is not going to run. Reason behind, पानी से गाड़ी नहीं चलती भाई. Same way, if rather than taking this as y is equal to x plus 1, if you take it as y is equal to root x, can I put 1? Yes. ये अगर root x हो गया. Can I put 1? Yes. Can I put minus 1? Root के minus 1? नहीं यार, नहीं यार. Here you can put anything you want. X can take all real values input. But in root x, we all know that x should be always greater than or equal to 0 because y की value real होनी चाहिए. If inside x there is a negative number, this becomes imaginary and there is something called complex number. मैंने किया है. You can go and check how complex number का जन्म कैसे हुआ, कैसे किया, ये सारा complex number में है. You can always see that. So y is equal to root of minus 1, not defined. क्योंकि इसका output should be real. That is the reason sometime function is also called a real valued function. What is a real valued function? Where input is such that the output is always a real number. Take an example. Suppose the input you take as y is equal to x plus 1 for, right? So obvious y is equal to x plus 1. Input can be capital R, right? And output is nothing but the set of values that is range. Input is called domain, right? So there are many kind of functions here. There are something called modulus functions. आपने पढ़ा होगा इसको in class 8th, 9th, 10th. Modulus of 2 is 2. Modulus of minus 2 is 2, right? पढ़ा होगा, डिस्कस करेंगे. There are something called आपका even greatest integer function. There are something called fraction part function. ये सारा हम सब नहीं करेंगे. I told you this basic, so we'll discuss more about modulus here. More about modulus here. बाकी पढ़ेंगे, but ये सारा ज़्यादा functions में करेंगे. Modulus entirely different kind of moduli, कैसे add करें, क्या करें, we'll discuss here. Like log की भी कुछ properties लेंगे. That is all in fundamental of mathematics. Log की properties we'll talk about, right? Log के equations नहीं, properties. So let us take the first function, modulus function here. Mod of function, how it goes, right? Question को ध्यान से देखिएगा. So this is the first function we have as a modulus function. F of x is equal to modulus x. It is x for x greater than or equal to 0. It is minus x for x less than 0. पढ़ा होगा, right? एक काम करते हैं, इसको करते हैं. Let us try and understand modulus function है क्या? What exactly the function is, right? I told you function is like a machine. ये एक machine की तरह है. So modulus is a machine, right? Modulus, इसका नाम है modulus क्योंकि it is like this. आप डब्बे के अंदर x डाल रहे हो, सो ये डब्बा है, इसके अंदर x आ रहा है और ये बाहर mod x बन के निकलेगा, राइट? दिस इज द वे आई एम थिंकिंग. मेरी सोच ऐसी होती है. डब्बे के अंदर x गया, बाहर mod x बन के आया, राइट? नाउ इफ यू पुट 2 हियर, यू विल गेट mod 2, दैट इज 2. मॉडुलस क्या है? वॉट एवर इज बीन पुट इनसाइड, जो भी अंदर डाला जाता है पॉजिटिव बन के बाहर आता है. इनफैक्ट अगर मैं कहूं नॉन नेगेटिव बन के बाहर आता है तो 0 भी कवर हो जाता है. देखिए, इफ यू पुट 0, द वैल्यू विल बी 0 व्हिच इज नॉट पॉजिटिव, राइट? सो इफ यू पुट एनीथिंग, इट्स पॉजिटिव पार्ट विल कम आउट. सो अगर आपने 1 डाला तो 1 निकला, 2 डाला तो 2 निकला, 3 डाला तो 3 निकला, 4 डाला तो 4 निकला, 0 डाला तो 0 निकला, 0.1 डाला तो 0.1. आप कुछ भी पॉजिटिव नंबर डालेंगे, अगर मॉड में इसके अंदर if you put any positive number 1 2 3 4 0.1 0.2 0.3 7.7, वही बाहर आ जाएगा. If you put x greater than 0, the value will be x, right? Same way, if you put anything less than 0, जरा पुट करिए, just put -2, बाहर क्या आएगा? 2. Put -3, बाहर क्या आएगा? 3. Put -4, बाहर क्या आएगा? 4. So when you put any negative number, -4, it's negative. Minus of -4, that is 4. If you put -3, उसका negative. If you put -2, तो -2 का negative. So when you put any negative number, its negative will come out. Am I correct? Because negative number, negative is positive.
So when you put x less than 0, you get minus x, which is positive. Are you there with me? So x positive will be x negative will be minus x. Obvious 0 को डालोगे 0 निकलेगा तो उसे पॉजिटिव के साथ लगा दिया जाता है. That is how this has come. When x is greater than equal to 0, the value is x. When x is less than 0, value is minus x. एक काम करते हैं, we'll try to draw this graph. इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. So कैसा है ये? f of x की जगह you can take y also. That is how we've been drawing graph for a long time. Is equal to mod x. It is x for x greater than equal to 0. It is minus x for x less than 0. अब ध्यान से देखिएगा, y x पॉजिटिव में when x is greater than equal to 0, y is equal to x है. When x is less than 0, y is equal to minus x है. When x is greater than 0, y is equal to x है. When x is less than 0, y is equal to minus है. काम करते हैं, x y is equal to, पहले ये ड्रॉ करते हैं, y is equal to x ड्रॉ करते हैं. Y is equal to x. Y is equal to x is a line that is passes through origin. Angle inclined is 45 degrees. So वही डाल रहा हूं. Y is equal to x. पाई बाय 4 या 45 डिग्रीज जो भी कह लीजिए. लेकिन क्या ये पूरा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा सिर्फ इसका डोमेन क्या है? y is equal to x is only, you are able to see y is equal to x only when x is greater than equal to 0. So when x is greater than equal to this area, so you are able to see only the right side of graph. Only y is equal to x only when x is greater than equal to 0. Are you there? y is equal to x only when x is greater than equal to 0. तो होगा क्या? ये पूरा तो नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा. ये पार्ट नहीं आएगा. रीजन इज, you will see this part like this. Line पूरा था. The line was y is equal to x. But this y is equal to x will be visible only when x is greater than equal to 0. इस पार्ट में x is greater than equal to 0 either in first quadrant and third on fourth quadrant. First और fourth में ही दिखाई देगा because x is greater than equal to 0. x less than में ग्राफ अलग है. x less than में ग्राफ अलग है. Let us see. मिटा देते हैं ताकि आपको क्लीन लगे, जितना मिट सकता है. So x less than 0. What is the graph for x less than 0? X less than 0, y is equal to minus x. Y is equal to minus x. Oh my God. Y is equal to minus x. So x greater than 0 में y is equal to x. इधर वाला ग्राफ दिखाई नहीं देगा. And x less than 0 में y is equal to minus x. Y is equal to minus x मतलब वही यार, 0 पे 0, 1 पे ड्रॉ कर देख लो. 0 पे 0, 1 पे माइनस 1, सो 0 पे 0, x1 पे माइनस 1, तो ये ग्राफ 0 पे 0, -1 पे 1, -2 में 2, सो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा. ये आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, लेकिन दिखाई देगा x लेस देन 0 में. तो अल्टीमेटली ग्राफ ना ये होगा ना ये, सिर्फ ये ग्राफ होगा. तो जैसे आप गेंद को फेंकते हो ना, तो नीचे जाता है, बाउंस करके ऊपर निकलता है, राइट. बट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45. ऑब्वियस द एंगल ऑफ बाउंसिंग बैक शुड आल्सो बी 45, ऐसे करके, राइट. वही जो आपका लाइट का रूल होता है. तो ये भी आपका 45 डिग्री है, पाई बाय 4 या फिर 45 डिग्रीज. ये भी आपका 45 डिग्री है, पाई बाय 4 या 45 डिग्रीज. दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to mod x. दोनों मिला के y is equal to mod x. Let us take a small recap. Understand it. So for x greater than equal to 0, first we drew y is equal to x, क्योंकि ये y is equal to x था. So y is equal to x ऊपर वाला ये ड्रॉ किया, right? लेकिन ये दिखाई देगा सिर्फ on the right side. So ये हट जाएगा. So this is only for y is equal to x, x greater than equal to 0. Right? Now let us go for y is equal to minus x for x less than 0. पहले you draw bindas y is equal to minus x draw करो. Y is equal to, I drew y is equal to minus x. But it will be active only when x is negative less than 0. तो ये पार्ट चला जाएगा, सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा. So दोनों मिला के, ये दोनों मिला के आपका y is equal to mod x या फिर f of x is equal to mod x होगा. ग्राफ को ले लीजिएगा. ये है y is equal to x, ये है y is equal to minus x. This angle is 45 डिग्रीज या पाई बाय 4. ये एंगल भी आपका 45 डिग्रीज या पाई बाय 4, राइट. ले लीजिएगा इसको.
दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod x, राइट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट? तो क्या था, अगर मॉड के अंदर मॉड के अंदर जो भी मॉड के अंदर जा रहा है, एनीथिंग दैट इज गोइंग इनसाइड द मॉडुलस, अगर वो चीज 0 या 0 से बड़ी है तो वही निकलेगा। मतलब क्या हुआ, इफ द थिंग दैट इज गोइंग इनसाइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही निकल जाएगा। इफ द थिंग दैट इज गोइंग इनसाइड इट इज नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव ताकि पॉजिटिव बने। सी नाउ वी हैव पुट x, कल को उसमें साइन, कॉस, टैन, कुत्ता, गधा, घोड़ा सब डालेंगे यार। तो हमें पता है अगर the thing that is going inside is positive, answer will be as it is, no change. अगर thing that is going inside is negative, तो उसका negative बाहर आएगा, right? So to understand it better, let us take one more. Can we take one more example? एक और example लें, ये तो mod x आ गया हमारे पास. Can we take one more example? Let us take one more example. We'll take f of x is equal to mod of x minus 2, right? Let's try this. All of you can pause the video and try it out. Fundamental of mathematics में I am not taking out the typical concept application, illustration का यूज नहीं कर रहा, फ्लो की तरह क्लास की तरह जाएंगे जैसे आपका रियल टाइम क्लास होता है, बिकॉज इट्स ए ब्रिज बिटवीन योर प्रीवियस क्लास एंड दिस। सो सिमुलेशन भी इसमें शायद नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि जाते जाते सिमुलेशन, आई डोंट थिंक सो सिमुलेशन ज्यादा होना चाहिए, कोई गलतियां नहीं निकालना, गलती यही है तो पूरी गलती कर रहे हो, राइट? वी आर टेकिंग ऑल दोज थिंग्स विच कुड पॉसिबली हैपन इफ यू डोंट डू दिस, वो सारी गलतियां ठीक करेंगे, राइट? सो लेट अस सी, ये कुछ ऐसा है, f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, ओके? सो अब मॉड की मशीन है, राइट? मॉड की मशीन के अंदर क्या जा रहा है बच्चे? x जा रहा है, x नहीं जा रहा है, अब जा रहा है x माइनस 2, अब जा रहा है x माइनस 2, अंदर जाने वाली चीज है बच्चे राजा x माइनस 2, अंदर क्या जा रहा है बेटा? x, पहले क्या था बेटा? अंदर के यहां पे x जा रहा था, Now x minus 2 जा रहा है, when the thing that is going inside is x minus 2, अब दो बातें हो जाएगी। केस 1, अगर x minus 2 पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, अबे घुसा दिमाग में, और अगर अंदर जाने वाली चीज नेगेटिव है, the thing that is going inside is negative, x minus 2 is negative, तो इसका नेगेटिव माइनस ऑफ x minus 2 आएगा, तो बना आपके पास x minus 2 for x greater than equal to 2 minus x plus 2 for x less than 2. इसकी जगह y भी लिख सकते हैं, f of x लिख सकते हैं, या फिर y लिख सकते हैं mod of x minus 2. So mod of x minus 2 is x minus 2 for x greater than equal to, obvious, when x minus 2 is greater than equal to 0, x should be greater than equal to 2. When x minus 2 is less than 0, x should be less than 2, minus x plus 2. अब इसका ग्राफ बनाएंगे, y is equal to x minus 2, y is equal to minus x plus 2, right? Obvious, डोमेन क्या होगा? x greater than equal to 2 और x less than 2. Let us see. तो ये आपके पास ऐसा आ गया, when x is greater than equal to 2, it is x minus 2, right? When x is less than 2, it is minus x plus 2. Check it out. x is greater than equal to 2, x minus 2, x is less than 2, minus x plus 2, right? हो गया? यही किया, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको y भी ले सकते हो आप। सो ऐसे जाना है, y बाकी सब भूल जाओगे तो ऐसे ही है, y is equal to x minus 2 for x greater than equal to, ऐसे पढ़ेंगे, y is equal to, ये तो सेम है, y is equal to x minus 2 for x greater than equal to, so x 2 या 2 से बड़ा एक तरह का ग्राफ है, x 2 या 2 से छोटा, सो x2 कहां होगा बेटा? x2 यहां पे होगा, ये रहा x2. When x is, so x equal to the graph, I'll draw the line. This is x equal to 2. So when the value of x is more than 2, x more than 2, graph is something else. When the value as x is less than 2, the graph is something else. I think all of you understand it, right? So more than 2 and less than 2, we have two separate graphs. तो इसीलिए अलग अलग किया है, इरेजर से इसको हटा देते हैं, बाद में कहेंगे कि गड़बड़ हो गया, या सो व्हेन x is greater than equal to 2, x 2 से बड़ा है, तो ग्राफ क्या हुआ? y is equal to x minus 2, करेक्ट ना? अब क्या करो? y is equal to x minus 2, बिंदास ड्रॉ करो, you draw total, right? x is 0, don't feel that x should be greater than equal to, draw the graph, x 0, y minus 2, x2, y0, x3, y1,
अब तीनों को ज्वाइन कर दो, ये हुआ ना, y इज इक्वल टू x माइनस 2। लेकिन y इज इक्वल टू x माइनस 2 दिखाई कहां देगा? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ही दिखाई देगा। सो ये जो पार्ट है ये चला जाएगा, राइट? ओनली ग्रेटर देन 2 वाला दिख जाएगा। अगेन द टोटल ग्राफ वाज दिस, y इज x माइनस 2, बट ये दिखाई देगा ओनली ऑन द राइट साइड ऑफ 2, 2 या 2 से ज्यादा में दिखाई देगा, तो ये वाला दिखाई नहीं देगा, तो ये वाला आपका इरेजर से गायब हो जाएगा। ऑल ऑफ यू आर देयर, राइट? नाउ आपको ड्रॉ करना है x लेस देन 2 में, लेस देन 2 ये रहा, x लेस देन 2 में ग्राफ क्या आया? x लेस देन 2 में ग्राफ क्या आया? x लेस देन 2, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। बिंदास ड्रॉ करो, डोंट सी x कहां है, x0 तो y2, x0 तो y2, x2 तो y0, तो ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसा, फिर नीचे भी जाएगा ऑब्वियस, ये पूरा ग्राफ होगा, राइट? लेकिन ये ग्राफ दिखाई देगा सिर्फ x लेस देन 2 में, तो यहां पे छोड़ रहा है, यहां पकड़ रहा है, तो लेस देन 2 में दिखाई देगा, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, राइट? ये पार्ट गायब हो जाएगा, ये तो रहेगा, ये जाएगा नहीं, राइट? ये पार्ट गायब हो जाएगा, ये 1 है, ये 2, सो लाइक दिस इट विल बी, राइट? ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। सो ग्राफ कैसे बना? पहले मॉड x था, मॉड x इक्वल टू 0, तो वी शेप एट 0। अब मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ये 0 कहां होता है? x2 पे, तो 1 to 2 पे एक वी शेप ग्राफ, बोलने की जरूरत नहीं है। दिस एंगल ऑल्सो विल बी 45 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो विल बी 45 डिग्री, राइट? जस्ट चेक द ग्राफ। ऐसे था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसको ऐसे कन्वर्ट किया, राइट? ऑब्वियस द थिंग्स आर चेंजिंग ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ 2, सो मोर देन 2 में ग्राफ ये आया, but it should be only greater than equal to 2 because y is equal to x minus 2 only for x greater than equal to 2. So graph will be visible only on greater than equal to 2. So less than 2 वाला ग्राफ आपका गायब हो जाएगा. It will go, right? Correct? Now let us come to the second, y is equal to minus x plus 2. ये दिखाई देगा s less than 2 में, सिर्फ ये less than 2 में दिखाई देगा. तो पहले पूरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ will be like this, but it will be visible only on less than 2. तो ये पार्ट जाएगा, तो ये पार्ट गया. So now we are left with this graph. This graph is nothing but like this V-shaped graph. Mod of x minus 2 था, तो ये 0, ये अंदर वाला 0 को बता 2 में, तो 2 में एक V-shaped ग्राफ, बोलने की जरूरत नहीं है. This is also 45, this is also 45. This angle is 45 degree pi by 4. This angle is also 45 degree pi by 4, right? So like this, many other questions you can try if at all you want to. Please try it out at home. Y is equal to mod of x minus 3. Y is equal to mod of x plus 4. Y is equal to mod of 2x minus 5. Y is equal to mod of x minus 10. ये 4 क्वेश्चन ट्राई करिए एंड DM में if at all you are not able to, कोई भी क्वेश्चन जो आपको मॉड के बेस पे, अंदर में भी सिर्फ एल्जेब्रिक लाइन डाला है, future will put sin x, cos x, tan x and all, right? So modulus का this is what we had, mod of x minus 2. ये क्वेश्चन आप घर पे करिएगा, right? Fine. So this is what we have in lecture number 1 of fundamental of mathematics. Modulus का थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ी उसकी शक्ल गंदी करेंगे, right? But इसके लिए this basic of modulus 10 बार 12 बार दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा यार. It is very important, right? So that's it for the day. This is Eswaran, your mathematics mentor, signing off on the platform of Teachtigers. See you all. Bye-bye. Take care.